بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Guys, today inshallah we will be solving all the questions of paper 2 that came in 2023. So the subject code is 0625. Question number 1 says that the diagram shows the current versus voltage graph for the metallic wire. What can be deduced from the graph? बच्चों, look at the graph. It's a straight line graph, and straight line graph is only valid for the ohmic conductor. और ohmic conductor की property होती है that resistance always remains constant. ठीक है? इसका gradient आप भी अगर gradient से देखना चाहते हो तो gradient is always constant ना. So we can say that when the voltage is increasing, the resistance of the wire remains constant. So option D is correct. ठीक है? बाकी सारे options incorrect है. तो आप देख लेना. Question number 27, it says that the battery is connected to the circuit. It is switched on for 1 minute, so time is given to you. During the time, there is a current of 0.4 amperes, so current equals to 0.4 amperes in the circuit, and the battery supplies a total of 48 joules of energy. So this is the total energy that is supplied by the battery. Which row gives the charge that passes and the electromotive force of the battery? So three pieces of information is given to you: the time, the current, and the energy that has been supplied by the battery. So using the formula of charge, charge equals to current multiplied by time. तो बच्चों करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम में आप लोगों को सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 0.40 amperes for the current and 60 seconds, because 1 minute equals to 60 seconds. You just have to substitute and you will get the answer of the total charge that is passing, that is 24 coulombs. Secondly, the EMF equals to work done upon charge. बच्चों work done हमारे पास it was given to you, that was 48 joules. ठीक है, 48 joules upon 24. 24 is a charge that is equals to 2.0 volts. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने potential difference, sorry, the EMF of the battery has been calculated as well as the total charge that is passing. So option C is correct. ठीक है. The next question. The circuit diagram shows two identical lamps. So these are two identical lamps, and identical means the resistance is constant. Okay. So 3 ammeters X, Y, and Z are also connected in the circuit as shown. So these are 3 ammeters that are connected in the circuit, and you must remember that ammeter is a device that is used to measure the current, or you can say it measures the total charge that is passing through a point per unit time. ठीक है, ये हमने definition लिख दी current की. Which statement about the current in the X is correct? So बच्चों current हमारे पास जो X है, obviously the total current that is supplied by the battery is flowing through X. तो ये हमारे पास total current की value दे रहा होगा जो कि इस source से आ रही है. ठीक है. Now at this point this current would be divided, or you can say would split in two parts ना. थोड़ा सा बटे करंट इधर चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया. ठीक है, बट स्टिल इफ यू ऐड these two currents that are passing from ammeter Y and ammeter Z, that would be the sum of these two currents would be equal to the total current that is supplied. So we can say X equals to Y plus Z. So option C is correct, which says that it is equals to the sum of the current in Y and current in Z. ठीक है. The student connects the circuit as shown. So this is the circuit shown to you. It consists of a battery, okay, with several cells. It contains a buzzer as well as the lamp. Which switch must be closed for the bell to ring without lightening the lamp? बेटे bell हमारे पास जो ये buzzer है या फिर bell जो है ये हमारे पास on होनी चाहिए. ठीक है, और lamp हमारे पास होना चाहिए off. So if the lamp is off, so switch 2 must be closed. ठीक है, switch 2 must be open. ठीक है, it should be an open switch ताकि यहाँ से current बिल्कुल भी ना गुजरे. Switch 3, बेटे switch 3 should be closed ताकि हमारे पास buzzer में जा सके current. After passing through the buzzer, the loop should be closed ना. तो यहाँ से देखो current हमारे पास यहाँ पे आया. ठीक है, it will obviously pass through the buzzer. ठीक है, और बेटे हमारे पास ये जो हमारे पास current को पूरा loop complete होना चाहिए ना, from positive terminal to the negative terminal. In order to reach negative terminal, switch 1 should be closed as well. ठीक है, it should not be open. So switch 1 and switch 3, both of these switch should be closed. ठीक है, तो हमारे पास option B is perfect. Moving on to the next question. The diagram shows the electrical circuit. So better it's an electrical circuit, contains the battery, a lamp and an ammeter. ठीक है, in which direction do the free electrons flow
around the circuit, and what quantity does ammeter measures? So ammeters measures the charge passing through a point per unit time, number one. And secondly, electronic flow लिखा हुआ बेटे electrons कहाँ पे flow कर रहे हैं, so obviously they will start from negative terminal, they will pass from ammeter from the lamp to the positive terminal of the battery. ठीक है, इस तरीके से बेटे हम ये जा रहे हैं. अगर आप इसको देखो, so this is basically anti-clockwise rotation, यूं करके rotate कर रहे हैं. So it's an anti-clockwise rotation and the charge passing each point in a circuit per unit time. Which substance both contains large concentration of the free electrons? So pretty large concentration of the free electrons, delocalized electrons. They are, it is a property of conductor because they contains the sea of electron, or you can say the large. Those are the large containers of the delocalized electrons. So look at option A, aluminum and glass. So glass is an insulator. This option is not correct. Copper and water. Water is also an insulator. And in the salted and contaminated water, जिसे हम थोड़ा सा salted water कहते हैं, it contains iron. So that could be considered as a poor insulator. ठीक है, still it's an insulator. Copper and nylon. Nylon is an insulator. Silver and gold. These are the best conductor of electricity. ठीक है, इसको रहने दें. Next question पे चलते हैं. The teacher wishes to show the production of the electrostatic charges. She holds a rod and rub it with a cotton cloth. The copper rod, a glass rod, a plastic rod, and the steel rods are available. Which two rods would both be suitable to use? So this is the process of charging an insulator. Okay, how to charge an insulator? The piece of insulator is rubbed by the cotton, and you can say the piece of cloth. One thing becomes positive and other thing becomes negative. इस तरीके से बेटे होता है. अब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को कौन-कौन से rods जो हैं वो चूज करने हैं. बेटे आप लोगों को इंसुलेटर चूज करने हैं. क्यों? बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस टू चार्ज एन इंसुलेटर. नॉट इन ऑर्डर टू चार्ज अ कंडक्टर देयर इज अनदर मेथड जो कि हम लोग पढ़ा करते थे प्रीवियस ग्रेड में आपको, या फिर प्रीवियस टर्म में हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसमें से हम लोग ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को पिक कर लेते हैं. So option B is correct. Two resistors with the resistance R1 and R2 are used as a potential divider. What is the relationship between R1 and R2 and the potential difference V1 and V2? So it's a potential divider. But we need to find, first of all, we need to find the relationship between V and R. बच्चों potential difference और resistance में हमारे पास क्या relationship होती है? Potential difference varies directly with the resistance. आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है. रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होती है. ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V1/V2 दैट इज इक्वल टू R1/R2. ठीक है, अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप होती, ठीक है, अगर ऐसा होता V वेरियस इनवर्सली विद R, तो बेटे V1 के सामने आता R2 और V2 के सामने आता R1. ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना. So option D is correct. The diagram shows a light dependent resistor connected in a potential divider circuit. So it's LDR that is connected in potential divider circuit. The brightness of the light falling on LDR is increased. but जब brightness increase होती है, देखो ये pattern, brightness increase होती है तो LDR की property होती है when the brightness increases the resistance drops. ठीक है, consequently the potential difference would be dropped as well. ये आप लोगों ने याद रखना है. Which law shows what happens to the resistance of the LDR? It would be dropped, decrease होगी बच्चों. What happens to the reading on the voltmeter? Since resistance varies directly with the potential difference, so voltage would be dropped as well. ठीक है, so option A is correct. The power source is connected to the resistor XY. बेटे it's a resistor. इसकी orientation given है XY. In which direction are the conventional current and the flow of the free electrons to the resistor? तो बेटे डायरेक्शन क्या होती है? The conventional current always flows from positive to negative terminal. ठीक है, पॉजिटिव से आया हमारे पास करंट और ऊपर जाएगा, राइट. So this is the direction of conventional current from Y to X. As far as electronic current is concerned, it starts from negative terminal. So बेटे हमारे पास नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, राइट. This would be the direction of electronic current from X to Y. ठीक है, from Y to X is the conventional current and from X to Y is the free electron flow. ठीक है, ये हमारे पास option C is correct. The next question,
Which unit is used to measure the electromotive force? तो बेटे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और या पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों का हमारे पास यूनिट होता है वोल्ट. ठीक है, represented by V. The graph shows the current versus voltage characteristic of the filament lamp, which statement describes how the resistance of the lamp changes as the voltage increases. बच्चों हमारे पास वैसे भी आप देख सकते हो कि जब जो हमारे पास फिलामेंट लैंप होता है, दिस इज द केस ऑफ मेटल्स एट हाई टेम्परेचर. और मेटल्स एट हाई टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और कॉन्सिक्वेंटली पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग द वोल्टेज, we are increasing the voltage, so basically we are increasing the resistance of the filament lamp. ठीक है, filament lamp गिवन हो आपको, इलेक्ट्रिकल हीटर गिवन हो, दोनों का हमारे पास सेम ये चीज होती है. अगर हम लोग ग्राफ में देखें बेटे, तो ग्राफ में करंट वर्सेस वोल्टेज है. इसका हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा दैट वुड बी 1/r. यहाँ पे आप आइस बनाओ, so it's a sad phase, इसका मतलब है 1/r is decreasing, so r is increasing. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. Now this is full wave rectification. इंशाल्लाह क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ हमारे पास बच्चों इस तरीके से बनेगा. ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है, we will discuss in class इंशाल्लाह. आपको मैंने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, so it says that the circuit shown can be completed by inserting the components at x and y. Let us wait for a song. Bismillahirrahmanirrahim. So the next question says that the circuit shown can be completed by inserting the components at x and y. The completed circuit is a potential divider in which the potential difference across component y increases when the temperature increases. बच्चों हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेचर तो बच्चों इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर में एक कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो दूसरे का ड्रॉप होता है. ठीक है, तो अब आपको देख लो कि हम लोग थर्मिस्टर कहाँ यूज़ करने वाले हैं. टेम्परेचर से सबसे पहले ध्यान आता है थर्मिस्टर पे. ठीक है, तो अभी हमें बिल्कुल पता चल चुका है कि एक हम थर्मिस्टर यूज़ करें बिकॉज देख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर. ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है उसकी, और कोई रेजिस्टर ऐसा नहीं पढ़ा हमने जिसकी डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसमें ना, तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, कॉन्सिक्वेंटली पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होती है. तो बेटे यहाँ पे हम लोग यूज़ करें थर्मिस्टर. ठीक है, और एक हम लोग फिक्स रेजिस्टर यूज़ करते हैं हमेशा. ठीक है, थर्मिस्टर एंड फिक्स रेजिस्टर कॉम्बिनेशन हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर बनाता है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, Which statement about the voltmeter is correct? बेटे voltmeter हमारे पास क्या measure करता है? It measures the potential difference across the component. ठीक है, so C option is correct. It either measures the potential difference or EMF. Question number 27. The wire has the resistance. अच्छा ये हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे. Resistance जो हमारे पास increase या decrease होती है. Question number 28. The plastic rod is rubbed with a cloth. The rod becomes positively charged. It's a very important statement. Rod बेटे positively charged हुई है, और कोई भी चीज़ positive charge कैसे होती है? By giving off electrons. ठीक है, lose करती है. Because of the movement of the charged particles, which row gives the name of these charged particles and the direction in which they move? बच्चों obviously charged particles are always electrons. जो भी चीज़ move हो रही है बेटे वो electrons है. Protons never lose their position. ठीक है, तो हमारे पास चार particles electrons हैं and they are moving from the rod because rod is getting positively charged and they are gained by the plastic rod. ठीक है, sorry, they are gained by the they are gained by the cloth. ठीक है, the rubbing cloth. तो हमारे पास from the rod to the cloth, so B option is correct. Alhamdulillah. The alternating current is supplied. The alternating current supply is connected to the diode and the resistor in a series circuit. So, beta, it's a series circuit. We have a diode, and whenever the alternating current is connected with the diode, it converts alternating current to the direct current, जिसे हम half wave rectification कहते थे. ठीक है, तो half wave rectification हमारे पास C option में C part में हो रही है. ठीक है, what it does, बेटे पॉजिटिव को तो it allows the positive current to pass through. ठीक है,
बट ऑपोजिट जो हमारे पास करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक स्टार्ट करंट, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जीरो पे, ठीक है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे, बिकॉज वहाँ पे करंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो इट्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सिंगल डायोड हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। So the question says that the diagram shows a circuit used to switch on the heater when the temperature drops below the certain value, ठीक है। ये मेरा बेटा हमारे पास एक potential divider है, which row shows the component that should be connected at x and y। बेटे हमारे पास x और y पे कौन सा component connected होगा? So obviously at x and y we need to find that component, और हमारे पास हो क्या रहा है? The circuit used to switch on the heater when the temperature drops below the certain value। बेटे this circuit is used to switch on the heater। कब वो switch on करेगा? जब obviously ये जो solenoid है ये बहुत ज़्यादा, ये solenoid magnetize होगी और बहुत ज़्यादा सख्ती से, और यू कैन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कब करना चाहिए? जब टेम्परेचर ड्रॉप हो, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप ये देखो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग थर्मिस्टर को लगा देते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन होती है, इफ वी आर यूजिंग थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक जगह यूज़ करें तो दूसरी जगह हम लोगों को यूज़ करना होता है फिक्स रेजिस्टर, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। So this question says that the diagram shows the part of the circuit. What is the combined resistance of the resistor? ठीक है. So this is a case of series in parallel because it was an ordinary parallel circuit जिसमें बेटे हम लोगों ने दो series resistors भी attach किए हैं, ठीक है. So first of all, you will have to solve these two series resistors, and the total resistance equals to R1 plus R2। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। That is equals to 2 ohms plus 1 ohm, that is equals to 3 ohm। So you can just replace these two resistors with one resistor whose resistance is 3 ohms, ठीक है। एक बेटे 3 ohm resistor है, एक हमारे पास 4 ohm resistor है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। Now I just need to solve this parallel circuit, जो कि होता है हमारे पास R total equals to R1 R2 upon R1 plus R2, ठीक है। 4 3 the 12 divided by 4 plus 3 4 5 6 7 7, that is equals to, just give me a second, let me use my calculator, 12 divided by 7, so I'm getting 1.714, ठीक है, 1.7 ohm। So this is correct option, C option is correct, ठीक है। Diagram shows a circuit which includes two resistors and the battery। So बेटे इसमें हमारे पास दो resistors हैं and we have a battery as well। इसको मैं erase कर लेता हूँ। So it contains two resistors। Now the voltmeter shows the reading of 6 volts। What is the potential difference across 30 ohm resistor? बेटे जब भी आपको VIR कुछ भी कैलकुलेट करना होता है तो हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस आपको VIR लिख लेना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया VIR। रेजिस्टेंस हमें पता है इसकी 30 ohms है, इसकी हमें दोनों चीज़ें पता है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 6 volts है, रेजिस्टेंस इसकी 10 ohms है। So we can use the formula to calculate V equals to IR Ohm's law to calculate the current across this component, ठीक है। So current becomes equals to V upon R। So current equals to V6 divided by 10, that is equals to 0.6, ठीक है। तो current हमारे पास है 0.6। Since it's a series circuit, so current remains same। यहाँ पे बेटे हमारे पास 0.6 amperes होगा current। Using the formula V equals to IR, you can easily find the potential difference। So 0.6 multiplied by 30, sorry 0.6 मैंने 60 से multiply करवा दी calculator पे। So I'm getting 18 volts now, ठीक है। C option is correct। Now the next question is, the circuit shown contains 3 switches and 4 lamps P, Q, R and S। So बेटे ये हमारे पास lamps के name है P, Q, R and S। So this whole circuit contains probably 3 switches, a battery and 4 lamps, ठीक है।
The switches must be closed to light only lamp P and R. बेटा सिर्फ P और R हमारे पास ऑन होने चाहिए, बाकी ऑफ होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। P हमारे पास होने चाहिए और R। बेटा जब भी जो जो चीज़ें ऑन होनी चाहिए ना, उससे आपको फुल हमारे पास पाथ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, करंट यहाँ से आया, स्विच वन शुड बी क्लोज ना, ताकि वो लैम्प P तक पहुँचे, ठीक है। इसे पास किया, और अगर बीच में भी कोई स्विच आता है बेटे उसको भी क्लोज करना पड़ना था हमें, ठीक है। सो अभी तक हमें पता चला है कि स्विच वन शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद लैंप आर है बेटे, ये हमारे पास लैंप आर तक गया था, ठीक है। ये देखो ये वापस पहुंच गया, ठीक है। सो और कोई हमारे पास लैंप आर की डिपेंडेंस एक्सेप्ट टू स्विच वन किसी पर भी नहीं है, ठीक है। सो स्विच वन शुड आल्सो बी, स्विच वन शुड बी क्लोज, ठीक है। ओनली स्विच वन शुड बी क्लोज। तो वो कह रहे हैं स्विच वन should only be closed, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question the second to last question. It says that the wind turbine is 30% efficient. So it says that the wind turbine is 30% efficient. 30% और परसेंटेज बेटे होती है हमारे पास 1/100, ठीक है। That is equals to 0.3. ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। Has the output of 2.5 megawatts. तो बेटे पावर आउटपुट है हमारे पास 2.5 megawatts, ठीक है। What is the power input? We need to find power input equals to question mark। अब आप देखो पावर का आंसर जो है ना सबका मेगावाट्स में है, तो हमें मेगावाट को कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0.3 equals to 2.5 divided by question mark, ठीक है। So question mark would be equals to 2.5 divided by 0.3. कैलकुलेटर में पुट करता हूँ। So I'm getting 8.33, ठीक है। 8.33 megawatts. B option is correct. Now 27th question. An electrical wire is connected to 240 volt supply, ठीक है। हमारे पास जो potential difference है that is 240 volts and transfers the energy at the rate of 1.0 kilowatts, ठीक है। हमारे पास जो पावर है that is 1.0 kilowatts, that is equals to 1 multiplied by 10 raised to the power 3 watts, ठीक है। How much charge passes through the wire in 1 hour, ठीक है। Time equals to 1 hour, that is equals to 1 multiplied by 60 multiplied by 60, because 1 hour contains 60 minutes and 1 minute contains 60 seconds, तो हमारे पास आ गया 3600 seconds, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब वो कह रहे हैं हाउ मच चार्ज passes through the wire in 1 hour, ठीक है। We just need to find the time that just give me a second, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस है। So we need to find how much charge passes through the wire in 1 hour, ठीक है। We need to find the charge। तो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला लिखा मैंने, charge equals to current multiplied by time, ठीक है। We don't have current basically, so we need to find the current। So what is the relationship between power and current? Power equals to V times I, that is equals to potential difference is given to us, that is 240 volts, power was 1000 watts, ठीक है। that is equals to 240 volts multiplied by current, so current becomes equals to 1000 divided by 240, तो ये आया हमारे पास 4.17, so current equals to 4.17 amperes, ठीक है। ये बेटे हमारे पास करंट आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं चार्ज। So charge equals to I multiplied by T using this formula. So 4.17 multiplied by 3600. So I'm getting 1500, ठीक है। That is 1.5, 15,000. That is 1.5 cross 10 raised to the power 4 coulombs. C option is correct. Two lamps are connected in parallel. Which switches must be closed so that both the lamps light? बेटे दोनों लैंप हमारे पास स्विच ऑन होने चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे पास जो लूप होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। देखो स्विच वन, in order to reach this lamp, the current will have to pass to switch one। तो बेटे स्विच वन हमें क्लोज करना है, obviously the current will have to pass to switch थ्री। स्विच थ्री क्लोज होना चाहिए, लूप कंप्लीट करने के लिए स्विच टू से भी पास करेगा करंट, ठीक है।
स्विच 2 भी क्लोज होना चाहिए, सारे स्विच यार क्लोज होने चाहिए, ठीक है। उसकी नौबत ही नहीं आई दूसरे लैंप की, ऑब्वियसली दूसरे लैंप पे जाएगा, ठीक है। देयर इज नो स्विच प्रेजेंट इन द पाथ, तो हमारे पास ऑब्वियसली सारे स्विच हमारे पास ऑन होने चाहिए, ठीक है, इनके क्लोज होने चाहिए, स्विच 1 स्विच 2 एंड स्विच 3। तो मेरा बेटा ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फुल वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने पीटी क्वेश्चंस किए अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, उस असाइनमेंट, दिस इज असाइनमेंट नंबर 1, और आप लोगों को सबमिट करवानी है इंशाल्लाह इसे बिफोर द क्लास। अपकमिंग क्लास जिसमें हम लोग P4 करेंगे, और इस असाइनमेंट का पासवर्ड है PAS112, ठीक है। या आप लोग यूज कर सकते हो पासवर्ड, और इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच।